A very good morning, guys. I hope am I audible to everyone. So I welcome everyone to Sriram IAS, a channel partner of Unacademy. Now, guys, this is a special session where we are targeting the mains exam, mains CSE mains 2023. The objective of this exam is to cover all important current affairs for the upcoming exams, which can help you to supplement your answers. So this session happens on every Saturday and Sunday. The timings for this session is in the morning, 10 a.m. It starts at 10 a.m. and from 10 a.m. till it is a 2.5 hour session where it will extend till 12:30 in the afternoon. So this is a series where we will be doing environment and ecology. If you are following me in the last video lecture, we were covering environment and ecology, and I will be continuing from where I have left in the last class. I am repeating this one more time that this is a mains session that will help you to supplement your answers in the upcoming mains CSE 2023. So guys, if you are willing to take the subscription, or if you are a new aspirant who need any guidance for the upcoming UPSC CSE 24, you can use this code Srirams and you can come along with us at Unacademy. So it will give you the holistic coverage for your prelims, mains, as well as your interview. Everything will be covered at Sriram IAS. So let us start today's class, guys. But before we start, just one more last announcement that I hope you know that on Saturday I come every time, and the areas that I will be taking in current affairs is international relations, which I have already covered in the last month. That means the complete June we have taken 3 video lectures there. So around seven and a half hours of international relations is covered there. Then this month we will be focusing on environment and ecology, and next month I will be taking up polity. Whereas on Sunday, Sanat sir will come. Sanat sir will take the class on the topics like science and tech, on the topics like economy. Okay, along with economy, he will also be taking areas like art and culture and other miscellaneous areas. Okay, so let us quickly start today's session. So guys, in the last class we were doing the importance of invasive alien species. What damage does this invasive alien species carry out on our biodiversity? So we have seen the impact of biodiversity, impact of alien species on biodiversity, and then what is the consequences. So this is where we have left in the last class. So I am taking my discussion from there. So now guys, we will discuss some important government initiatives which has been taken in order to conserve the biodiversity of our country. So what are the various initiatives that are taken by the government to conserve biodiversity of our nation? So first, we came across a National Action Plan on Invasive Alien Species. This plan covers from the time period 2021 to 2025. So under this plan, it will provide a broader framework to basically identify what all areas are impacted with invasive alien species, then to monitor their impact, and then managing them, so we can reduce the impact of invasive alien species on our biodiversity. So it further aims to prevent any new introduction and already control the existing invasive alien species, and then restoring the affected ecosystem. Like for example guys, I hope there was one fish which was in news. It was a form of a trout fish. This is an invasive alien species, and this was found in your Srinagar Dal Lake. This is something very dangerous, because this invasive alien species is known to hamper the local ecosystem.
Okay. Then we have National Mission on Biodiversity and Human Well-being. This is another mission that was launched in 2018 in order to conserve and sustainably manage the biodiversity, including addressing the threats posed by the invasive species. And then ICAR, the Indian Council for Agricultural Research, has introduced biological control program. Okay, this biological control program by ICAR is involved in implementing biologically controlled measures so that you can reduce the damage of invasive alien species in the field of agriculture, forestry, and natural ecosystem. So they have their own program which is running. It includes introduction of natural enemies or biological agents that can control the spread of invasive species. So basically you are targeting invasive species naturally. Is it clear? So this is a very important initiative, guys. Then what other initiatives government have taken? Then research and monitoring. We all know that the government is doing a vulnerability map for the areas affected under invasive species. Then after identifying the species, after drawing the maps, they will work on the strategies to control the ecological impact of invasive alien species. Okay, they will study it, they will research it, and then thereby reducing the impact of those species. Other than that, public awareness and capacity building. So people should know that which species belong to what kind of ecosystem. This is very much important. So people, we need to teach people, we need to give them awareness so that they can learn from the different impacts of invasive species and encourage more citizen partnership in carrying out the capacity building against the invasive alien species. Then other than the research, training and awareness, we need to strengthen our laws. So regulatory framework becomes equally important. So various laws and regulations such as Wildlife Protection Act, Biodiversity Act, all these acts, they give a detailed guideline and it give a detailed regulation to all the executive bodies to provide the legal framework to regulate the introduction and spread of invasive species. Okay, so these regulation helps to control and ensure the compliance with the guidelines for preventing the spread of these species. Then at international level, so all these initiatives were at national level. Now let us see what are the initiatives at national level. So IUCN Invasive Species Specialist Group. So there is a special group that has been created that will provide all the necessary technical and scientific support for the implementation of various measures to control invasive species. So they are working from 2000, since 2016, this group is working internationally. So they provide all the scientific and technical, what is more important is providing the technical support to many countries. Like for example, there are many LDCs, the least developing countries, they do not have those resources to tackle invasive species. They do not have that ample resources. So उनके पास पैसा नहीं होगा और एक scientific knowledge नहीं होगी, तो how they will tackle it? Okay, so then at international level there is a global invasive species database. So this database will give all necessary information to this specialist group. So this specialist group will take all necessary information from this global invasive database. All right. So there will be a IUCN Species Survival Commission which was developed between 2000 around 2000 as a part of global initiative on invasive species that is led by the Global Invasive Species Program. So GISP is a program that also assists or they take care of this global invasive species database. And then Global Invasive Species Program 1997. So this is a supporting implementation. This
was formed under Article 8H of Convention on Biodiversity, CBD, Convention on Biodiversity. So as a partner organization, it also works to address the global threat to the invasive alien species. Then very recently, we have amended the Biological Diversity Amendment Bill. Into 2021, this bill was recently amended, and there were many provisions under this bill that were highly criticized by the many environmental groups. Why? We will see the amendment. For example, for the first thing, the purpose of this Biological Diversity Amendment Bill was so that the conservation of biological diversity, sustainable use of components, and fair sharing of benefits can happen. So that it also led to the formation of a executive body. इसके अंदर एक executive body बनाई गई है at national level, National Biodiversity Authority, at state level, state biodiversity boards, and further at a third tier, at a local level, we have the biodiversity management committees. So all these statutory bodies which are formed under Biodiversity Amendment Bill will work for the biodiversity conservation in their respective domain, in their respective jurisdiction. So इसके अंदर broadly क्या amendments लाए गए हैं? So first, they will boost the Indian medicine systems, especially the Ayush. The government is working on building the Indian medicine systems, especially Ayush. For example, how they will help them, like facilitating research, patent application, transfer of research results. All these areas will help building the Indian medicine system. Then decriminalizing the certain provisions which are aligning with the Nagoya Protocol. Now this was highly criticized by many environmental groups. So basically, under the Nagoya Protocol, what is Nagoya Protocol? Basically, to share all important information about the GMOs, or genetically modified organisms, and other important organisms, so that we can develop a vast pool of knowledge on different biodiversity at a international front. एक बड़े इंटरनेशनल लेवल पर सभी बायोडाइवर्सिटी का इंफॉर्मेशन शेयर करना, यही नगोया प्रोटोकॉल का मेन ऑब्जेक्टिव था. सो बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल में they have decriminalized certain provisions so that this benefit sharing can happen. However, this was very much criticized by many environmental groups. बहुत सारे environmental groups ने इस provision को, इस leniency को, इसके against उन्होंने they raised their concerns. Then allowing foreign investment. So that means to carry out research and development, this bill will now allow foreign investments. That means foreign companies can come and carry out research in India. Then exempting the Ayush practitioners. Like for example, whenever a research has to be carried out, first of all, there has to be proper clearances that has to be given. Clearances will be given from national level, then state level, and then the local authorities will be informed. So Ayush practitioners are now exempted. They can easily go in any conservation area and then they can carry out their research from and there is no need to inform the state biodiversity board for any kind of biological resource accessing. So if I'm a Ayush doctor, I can straight away go in a forest, in a conserved area, and I can easily pick whatever resource that I want. अगर मुझे कोई specific herb चाहिए, plant चाहिए, I can easily carry that back home to carry out the research. Now this is again something which is highly criticized. Now what are the concern here? So this will further lead to commercialization of forest. इससे मेन क्या थ्रेट बढ़ता है? कमर्शलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट बढ़ता है. दैट मीन्स
यहाँ पर हम जितना ज़्यादा आयुष और ऐसे रिसर्च एरियाज को बढ़ाएंगे तो आप देखोगे देयर विल बी कमर्शलाइजेशन ऑफ all the natural herbs, all the natural fauna which is flora which is available in the jungle. वो उनको the people will be promoted to extract more of that, ठीक है, because they will have a high tradable value, उनका commercialization हो जाएगा. So this bill is promoting more trade. Then threat of biopiracy, like for example, if I know that one particular herb is only found in that particular region, like for example Nilgiri flowers. Nilgiri flowers are only found in the Nilgiri reserves. अगर मुझे ये पता है, and what if I pluck those flowers and I start growing that flower in my backyard or maybe in my farm, and this can be done with the help of Ayush practitioners because they are exempted from any clearances. So this lead to biopiracy. Okay, this is somewhat stealing an important resource from one area and then taking this resource to some other place and then recultivating it. So imagine the threat to that particular diverse flora or fauna. Okay, अभी तो मैं सिर्फ herb और इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ. Even many animals are also included in the list. Then marginalizing the BMCs. So all biodiversity, see what are BMCs? The biodiversity management committees. So basically all these committees, their involvement will be very less because you know that there is a less stringent norms which has been created through this amendment. And along with this, there is a sidelining of the local communities or the local stakeholders. So there is no involvement of the local stakeholders there. What is the result? The result is that over the period of time you will find that the local community will be developing a feeling of complacency, or they will develop a feeling of negativity against all these activities which are growing. Okay, so exemptions of cultivated medicinal plants may undermine the benefit sharing provision. So maybe in future all these local communities won't be able to benefit from the local available biodiverse resource. Then in order to prevent the biodiversity or for biodiversity conservation, what are the legal frameworks in India? Some important laws. ये कुछ लॉज तो आपको मेंशन करने ही होंगे, ये तो आपको as it is याद करना होगा. So if any question comes on any kind of conservation, you can include this. So first important act of our country is Wildlife Protection Act. Wildlife Protection Act 1972. This gives a legal protection to wildlife, their habitats, and then it regulates hunting, poaching and trade in wildlife products. Like आपने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्टेटस देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स का, लाइक दे आर पुट अंडर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, राइट? So what do you mean by this schedule 1, schedule 2? So all the animals under schedule 1 cannot be hunted down or cannot be poached down. उनका trade prohibited है. There are strict measures that can be taken against the individuals who are involved in the trade of the schedule 1 species. Then Forest Conservation Act 1980. By the way guys, one important information here, a new Forest Conservation Act has been tabled in the Parliament. 1980 के बाद एक नया Forest Conservation Act Parliament में टेबल कर दिया गया है, and it is expected that in this monsoon session your Forest Conservation new act will be passed by the Parliament. So अभी इस एक्ट के साथ साथ आप नए एक्ट को भी, जब तक आप मेंस में लिखोगे तब तक शायद ये एक्ट आ चुका होगा. सो आपको उस एक्ट के प्रोविजंस अगर आप मेंशन कर देते हो तो दैट विल बी द मोर रीसेंट
legal framework that you will add in your answers. Then environmental impact assessment notification 1994. We all know that in order to start any mega diverse project, any such project that has a tendency to hamper the biodiversity of a region, it has to go through certain environmental clearances. उसको कुछ environmental clearances से होकर गुजरना पड़ेगा और उसके लिए EAIA का प्रोविजन हमारे देश में है. I hope all of you have done what is EIA. आपने EIA जरूर पढ़ा होगा आपके स्टैटिक पोर्शन में एनवायरमेंट के. So this policy requires environmental impact assessment for projects that may have significant environmental impacts, including those affecting biodiversity. So for example, there is a hydroelectric project that is proposed, or let's say there is a mining project that has been proposed. So all these projects has a huge cost on the biodiversity of the region. They have a huge cost on biodiversity of the region. Okay. Then the Biological Diversity Act of 2022. So this act aims to conserve biological diversity and then to regulate the access to biological resources and associated knowledge, and then to ensure equitable sharing and benefits arising from their use. So this is Biological Diversity Act 2002. ये भी एक important legal framework है when it comes to biological conservation. Then what are the other initiatives? We have a National Wildlife Action Plan जो कि 2002 से 2016 के time period के लिए था. It gives all the important framework for conservation, habitat management, species recovery, protected area management, all such things are covered under this. Then National Biodiversity Strategy and Action Plan 2008. So this basically outlines the country's strategic priorities, actions for biodiversity conservation, sustainable use of biological resources and equitable benefit sharing. So National Biodiversity Strategy and Action Plan 2008. Then Ramsar Convention on Wetlands. This is again something that remains in news, especially for all the transitional zones, all the wetlands in the country. It is covered under their protection, covered under Ramsar Convention, which is it can be treated as an international initiative, or it is applied as it is in India as well. And then we have the Wildlife Crime Control Bureau. This is specialized law enforcement agency that works towards prevention, detection, prosecution of wildlife crime, including illegal trade in wildlife. So किसी भी तरह का hunting, poaching activities को counter करने के लिए you have the Wildlife Crime Control Bureau in India. Okay. Then other than this, you know that there are protected areas and conservation reserves, like what are national parks, wildlife sanctuary, biosphere reserve, community reserve. All these demarcation or all these protected areas are in a way, what are their main objective? The main objective is the biodiversity conservation. ठीक है. सो आप इनको भी अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो जब भी क्वेश्चन आएगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से. Then guys, moving ahead, there are some species specific conservation program. इस साल टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. Why? Because Project Tiger has recently completed 50 years. So 50 years have been completed by Project Tiger, and in last month, last to last month, tiger census has been released. The recent tiger census has been released, where there is a population growth of 200 tigers. 3167 total tigers हमारे देश में available हैं. There are 3167 tigers which are available in our country. Okay, so tiger census and project based species specific conservation programs are important, और उसमें सबसे ज़्यादा important project tiger है. ठीक है. So we all know what are the aims of Project Tiger.
to protect and conserve the Bengal tiger and its habitat. It involves establishment of tiger reserve, anti-poaching efforts, habitat management, community participation, etc. Project Tiger के ये broader dimensions है. On the lines of Project Tiger, एक second बड़ा project जो हमने introduce करा था वो था Project Elephant. 1992 में ये project launch किया गया था. Focus obviously conservation of elephants. It addresses issues such as habitat protection, human-elephant conflict, anti-poaching measures, research and monitoring. इन सब areas को ये target कर रहा था Project Elephant. Then Project Snow Leopard. Now, along with this, I hope you are aware of International Big Cat Alliance. International Big Cat Alliance. So in this, guys, in this big project, we are focusing on safeguarding 7 important species of tiger, and we are planning to reintroduce all these species in India. Now, out of them, tiger and snow leopard are also there. Tiger and snow leopard. ठीक है, वैसे तो leopard भी है उसके अंदर, but tiger and snow leopard also there, and we have a dedicated species specific conservation program for snow leopard. So इसके अंदर आप leopard, snow leopard, then आपका आ गया cougar, or you can write puma, then cheetah, okay, jaguar and lion. All important 7 cats का एक initiative है International Big Cat Alliance. It becomes important. Why? Because India is the country that will be promoting this, or India has started this initiative. So this is why this program is important. Then guys, Project Crocodile Conservation Project, जो कि crocodile, Indian species of crocodile को protect करेगा, उनका रिस्टोरेशन करेगा, हैबिटेट रिस्टोरेशन, पॉपुलेशन मॉनिटरिंग, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. इट विल इंक्लूड द मगर क्रोकोडाइल एंड द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, बोथ विल बी गिवन द प्रोटेक्शन. अच्छा, बाय द वे, ऑन द लाइंस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, वी ऑल्सो हैव अ प्रोजेक्ट लायन. ठीक है, सो किस तरीके से हम लायन को कंजर्वेशन दे सकते हैं, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. ओके, हाउ वी हैव टू कंजर्व लायन. ऑलराइट, सो guys, Project Lion, basically the biggest challenge that right now we have. What is the biggest challenge right now we have for lions? First of all, the lions in India are less genetically diverse. Lions in India are less genetically diverse. How? Because lions को हमने सिर्फ एक जगह पर इकट्ठा करके constrain करके रखा हुआ है. We have kept all the lions at one place, one single place only. कहाँ पर है? गिर नेशनल पार्क इन गुजरात. Right? I hope you are aware of this, that we have there is only one dedicated protected area for lions in our country, that is गिर नेशनल पार्क. Now एक ही जगह पर जब लायन कंजर्व रहेंगे, so they will be carrying out इंट्राब्रीडिंग. दैट मीन्स सेम स्पीशीज के अंदर वो लायन ब्रीड करेगा, और जब सेम स्पीशीज के अंदर ब्रीडिंग होगी तो जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ऑफ लायंस, दे विल बी लेस जेनेटिकली डाइवर्स. उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी वो लेस डाइवर्स होगी. एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? दैट दे विल बी प्रोन टू मेनी डिजीजेस. लाइक there was one thing, there was a virus that was very quickly spreading, canine distemper virus, CDV.
कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था और इस वायरस की वजह से बहुत सारे लायंस हैज सफर्ड. They have lost their life because of this virus. And why these lions were not able to fight these viruses? Because the problem less genetically diverse. So ये कुछ हमारे programs थे. Then initiatives that we have taken to improve research and capacity building for biodiversity conservation. So we have many authorities and many action plans. Like for example, we have नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो कि सभी तरह की रिसर्च, ग्रांट्स, कोलैबोरेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में करता है. देन नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान, ये एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क देता है ताकि आप रिसर्च कर सको, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, नॉलेज डिसमिनेशन हो, बायोडाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग हो, उसका मैनेजमेंट. तो जितना भी ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है वो इस प्लान के अंडर आता है. So this is the executive body, and this is basically the operational framework for the biodiversity conservation. ये एक operational framework देता है. Then Indian Council for Forestry Research and Education, basically ये सभी तरह की रिसर्च करता है आपके फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी में, इकोसिस्टम मैनेजमेंट में. It offers training program, workshops, fellowship to build capacity among the forest professionals and researchers. ठीक है. The National Institute for Animal Welfare, it conducts research, training, awareness campaigns for wildlife conservation, promoting scientific studies, capacity building in animal welfare. So ये भी एक institute है जो कि animal welfare पे काम करता है. Then Zoological Survey of India. Zoological Survey of India conducts all the research, capacity building, collaboration with the institutions for animal biodiversity, taxonomy, contribution to scientific knowledge and skill development. Okay, these are the areas for research and capacity. Then restoration and afforestation. So for restoration and afforestation, so guys, for restoration and afforestation, we have National Afforestation Program that promotes afforestation restoration activities to enhance biodiversity and restore the degraded lands. So एक बहुत broader level पर हमारा एक program है National Afforestation Program. Then on the similar lines we have the Green India Mission. The target of or the objective of this Green India Mission is to increase forest cover, restore ecosystem and enhance biodiversity conservation. Then CAMPA. Now what is CAMPA? Compensatory Afforestation Fund Management. Like for example, if you are clearing this parcel of land which is A, अगर आपने यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं एरिया में सारे काट दिए, आपको इतने बड़े एरिया में दोबारा से पेड़ लगाने के लिए जो पैसा लगेगा वो ऑलरेडी क्रिएट करना पड़ेगा. इसी को कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड कहा जाता है. ठीक है. सो दैट यू कैन कॉम्पनसेट फॉर वॉट एवर डिग्रेडेशन यू हैव डन इन ऑर्डर टू कैरी आउट योर डेवलपमेंट. मान के चलो यहाँ पर हमें कोई माइनिंग करनी थी या हमें कोई इंडस्ट्री लगानी थी, किसी फॉरेस्ट में हमें जरूरत पड़ी, बट अंडर दिस कैंपा प्रोविजन आपको एक सिमिलर अमाउंट ऑफ फंड क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आप एक सिमिलर लेवल का जंगल किसी और जगह पर बना सको. ऑब्वियसली इसके मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों हैं. ठीक है. बट अगेन दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू इट कैन हेल्प टू मिटिगेट द एफर्ट्स. द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया.
नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया का काम क्या है? इट फोकसेस ऑन improving forest and tree covers, enhancing ecosystem services and promoting sustainable livelihood. So national mission for green India. ठीक है, इसके बाद कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी देख लेते हैं. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या है? फर्स्ट, CBD इज वेरी फेमस, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. एक लीगल बाइंडिंग ट्रीटी बन जाती है हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू CBD. इट इज अ लीगल बाइंडिंग ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि 1993 से आपका एक्टिव है और इंडिया ने इसको साइन करा हुआ है. इंडिया इज अ एक्टिव मेंबर ऑफ CBD. Then Convention on International Trade in Endangered Species of Wildlife and Fauna Sites. ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि पब्लिक, प्राइवेट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को सभी तरह की नॉलेज देता है, सभी तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देता है, एंड इट गिव्स द नेचर कंजर्वेशन टू टेक प्लेस and it protects all illegal activities associated with the endangered species. Okay, and India is the member of this convention, so this is important. Then World Wildlife Fund, WWF, ये भी एक important international non-governmental organization है. That means it is a international NGO that works for conservation, research, restoration of natural environment. Then बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्रिटिकल पीयर्ड रिव्यूड साइंटिफिक एनालिसिस है. बेसिकली दे कैरी आउट द रिसर्च ऑन द करंट इश्यूज विच आर फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. लाइक very recently this global biodiversity assessment has done their research on the California फॉरेस्ट फायर. अभी कैलिफोर्निया में बहुत बड़े लेवल पर फॉरेस्ट फायर्स लग गई थी. उसमें जितना भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ उसका सारा रिसर्च इस ऑर्गेनाइजेशन ने करा था. इट इज अ इंडिपेंडेंट NGO आप कह सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर. देन मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये यूनेस्को के अंडर एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है. मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. It was launched in 1970. It has initiated programs and activities focusing on the diversity and the resources provided by the nature and impacts of the humans on biodiversity, as well as how the biodiversity affects the human activity. So, हमारे इंडिया में, यहाँ पर हमारे देश में भी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स कवर्ड हैं. कैन यू गाइस टेल मी इन द कमेंट बॉक्स दैट हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर कवर्ड अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इन इंडिया? कैन यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स गाइस? देन गाइस वेरी क्विकली, CBD का 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया था. इसके कुछ की आउटकम्स मैं आपको बता देता हूं, ताकि अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है, यू आर इन अ पोजिशन टू आंसर दैट क्वेश्चन. COP15 इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स एग्जाम बिकॉज इसी साल ये कन्वेंशन हुआ है. So Global Biodiversity Framework, COP15, it basically sets a target of protecting 30% of land and sea areas, reducing the chemical pesticide fertilizer by 50% by 2030. That means first they will protect the 30% of land and sea areas. Along with that, reduce the use of fertilizers. Reduce the use of fertilizers. Okay, ये इसका एक important एजेंडा है. Then addressing the biodiversity loss. So COP15 में सबसे important
जो आपका ड्राइवर है, यानी व्हाट आर द रीजन और फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी लॉस, is first habitat destruction, over exploitation of resources and climate change. इसको ट्रिपल चेन इफेक्ट भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रिपल चेन इफेक्ट. ओके, habitat destruction, over exploitation and climate change. Then financial resources. Financial resources का mobilization in order to carry out the biodiversity conservation. They have increased funding, investment and the involvement of private sector. So इस CBD के अंदर ये भी include किया गया है how to raise funds. Then indigenous people and communities. So we all know in order to give the best conservation, local community is important, or protection of local community becomes important. All right. So basically इसके अंदर you will include the traditional knowledge of the local community and impact of any biological or biodiversity conservation on their cultural life, on their regular life. It is also they are also trying to balance this कि लोकल लोगों की लाइफ किसी भी तरीके से वहाँ इम्पैक्ट ना हो, उनके राइट्स इम्पैक्ट ना हो, उनकी नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और उनका प्रॉपर एंगेजमेंट हो. दिस इज समथिंग अ गुड इनिशिएटिव अंडर CBT. And then the fair and equitable sharing of benefits. So for example, whatever the genetic resources are there in a jungle, so you have to take the benefit so that the benefit of that resource can reach the maximum people. यही एक important agenda है CBD का. And then respecting the indigenous right and ensuring equitable distribution of biodiversity benefits. ये भी एक important target है. Then guys, some important case studies. Okay, some important case studies that you can add in your answers. ये कुछ बहुत important case studies है हमारे पास्ट में. For any question on biodiversity conservation, you can add these case studies. First, the Dongariya tribes. So the Dongariya Kond tribes of Niamgari Hills, they are among the best conservationists in the world. They are the best conservationists because they treat their forest as sacred groves. उनके लिए फॉरेस्ट सिर्फ फॉरेस्ट नहीं है, वो उनके लिए उनका लाइफ है, उनका कल्चरल इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट के ऊपर. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट फॉरेस्ट एंड दे ट्रीट एंड दे वर्शिप द फॉरेस्ट. So they known for their spirited defense for their forested habitat against the short-sighted industrialization, and through the millennia involved a lifestyle that is perfect harmony with the nature. So basically they give you the ideas that how you can even extract the resources from the forest without even damaging the forest. Okay, then the next one is the Narmada Bachao Andolan. This is one important initiative that has been running in our country. This Andolan is still active. Okay, it is one of the oldest environmental movement in our country, Narmada Bachao Andolan. Basically the objective was to provide rehabilitation and resettlement for all the tribal people and all the local people who are impacted by the Narmada project. Okay, because under the Narmada project there are series of different dams that has to be created, reservoirs that has to be created, which will ultimately force a vast population to relocate from the area. Then Chipko movement, this Sundarlan Bahuguna
and the other villagers have worked on this Chipko movement, where they hugged the trees so that they can stop the trees from the cutting. Okay, it was again a very important environmental movement. Basically, they want to convey the importance of tree in the environment, where the tree can help in checking soil erosion. It helps to promote the local climate. It causes rain. It gives us pure air. So the women of the Advani village of Theri Garhwal tied the sacred thread around the trunks of the tree, and then they hugged the tree. Hence it was called as Chipko movement. Hindi में आता है ना, hug the tree movement. इसी का same, there was a one similar movement that has happened in down south, in the peninsular south. It was known as the Apico movement in the Silent Valley National Park. Apico movement. आप अगर लिख रहे हो तो दोनों movement के बारे में लिख सकते हो. Silent Valley National Park. Then Bishnoi movement. It is known for their conservation of the forest, conservation of animal, and they have a people participatory movement for environmental protection in India. Next, we are moving with a new unit, oceanography. Now guys, this oceanography is again very important. There has been various PYQs that has been asked in your GS3 as well as GS1 over the period of time. So I am giving you a little time of 30 seconds to read these questions on the screen. These all are your previous year question paper from the unit oceanography. So now let us start. What is oceanography? So basically, oceanography is the study of the chemical, physical, and the biological characteristic of the ocean. It includes the study of the ocean's ancient history, the present condition, and its future. So guys, at present, we only know just 3% of the ocean. We do not have any much information about the oceans. And overall, when we say that ocean covers around 70% of the Earth's surface, so it has a direct link. Its health, its condition, its living environment, are kind of interwoven. Okay, so there are different types of problems that our ocean faces today. Out of them, some major problems are ocean acidification, then climate change,
these are the problems that our ocean face in the present context. Okay, so now if we broadly highlight that what are the major relief features of the ocean. So we all know that ocean comprises of different types of relief features. First, we have the continental shelf, then continental slope, then continental rise, and the abyssal plain. So this portion of the ocean is something where more than 80% of the ocean's biodiversity exists. Okay, 80% of the ocean lies here. Then there are various type of relief features which are even found in the ocean bottom. So we all know that there are some sea mounts that are created because of some volcanic activity. Then a sea mount with a flattened top is known as the gyots. Then there is abyssal hill, volcanic islands, submarine canyons, submarine ridges, then mid-oceanic ridges. All these are the various features of the ocean bottom and relief features. And then we also have the trenches. So basically the trenches are formed wherever there is a convergence of a continental plate as well as a oceanic plate. So wherever there is continental oceanic convergence, you will find the heavier plate is subducting inside the less denser plate, resulting in formation of trenches. Then guys, very quickly, what is salinity? So salinity is the amount of salt dissolved in grams, like how much amount of salt is dissolved in the ocean determines the salinity of the ocean. So on an average, the average salinity of the ocean is around 33 ppt parts per trillion. Now anything above 24 gram or 24 ppt is said to be brackish water. Anything above 24 ppt is said to be brackish water, and below this it is a permissible regular water. Okay, so we have places where the average salinity has also touched around 340 ppts in the world. ऐसी भी जगहें हैं पूरे वर्ल्ड में where the average salinity has touched around 340 ppt. So can you tell me, like for example, Dead Sea near Israel. फिर एक और सबसे सलाइन जगह है हमारे अर्थ पर, लेक वान. Lake Van is located in Turkey. Okay, Lake Van in Turkey is the most saline place in the world. यहाँ पर एवरेज सैलिनिटी लगभग 340 के आसपास है. बेसिकली बोथ ऑफ देम आर इनलैंड सीज और इनलैंड वाटर बॉडीज. Both of them are inland water bodies. So salinity is important first of all for two reasons, because salinity controls the temperature, it controls the effect of seawater density. For example, more the water is saline, more it will be denser, or it will be more denser. So therefore the circulation of ocean currents also depends on salinity. अभी हम देखेंगे Atlantic meridional circulation. Whenever there is a change in salinity, this movement of ocean currents also hampers. Then second, the sea surface salinity, which is closely linked to Earth's overall water cycle.
So how much the water is, or how much saline water is there in the top layers and how much the saline water is there in the lower layers in the ocean is something which governs the salinity. Then what are the factors that affect salinity? First factor is rate of evaporation. So whenever there is more and more evaporation, you will have more salinity, because the overall impact of more evaporation will be more water that is lost from that area. High temperature, more evaporation, that will lead to more saline areas. Then flow of fresh water. Whenever there is more flow of fresh water, like guys, for example, on equator पर salinity के बारे में what can you comment? क्या इक्वेटर पर salinity बहुत ज्यादा हाई होती है या लो होती है? How you can comment on this? So guys, it is very surprising that on equator we have the highest temperature, the sunlight is direct. But if I say that there is low salinity in that region, then what you will comment? The answer is correct. The regions of equatorial places have low salinity. Why? Because despite high temperature वहां पर fresh water addition होता रहता है, because equatorial rains की वजह से. So evaporation ज्यादा है but rains भी ज्यादा है, तो overall salinity बहुत कम होगी. So ज्यादातर salinity और rate of evaporation कहां पर impact करेगा? जहां पर आप देखोगे कि जो लेक्स हैं, इनलैंड लेक्स हैं, ट्रॉपिकल एरियाज हैं, जहां पर फ्रेश वाटर फ्लो कम है और इवेपोरेशन ज्यादा है, इस वहां पर सैलिनिटी हमेशा ज्यादा होगी. एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, लेक वान, डेड सी, सांबर लेक इन इंडिया. ठीक है, इंडिया का सबसे ज्यादा सलाइन लेक कौन सा है? सांबर लेक. उसको सांबर लेक भी इसलिए कहा जाता है बिकॉज एक इनलैंड लेक है. ओके, इट इज अ इनलैंड लेक. Then water mixing by currents. So for example, जो हमारे ocean currents हैं, they also flow from one area to another area. So wherever there is more water flow, जहां पर ज्यादा बड़ा oceanic current का circulation होगा, वहां पर better redistribution होगा salinity का. Whereas areas where there is less, the areas where जहां पर इनक्लोज्ड सर्कुलेशन होगा, जहां पर पानी बहुत ज्यादा लंबे एरिया में नहीं मूव करेगा, वहां पर सैलिनिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी. देन climate change is also something that is impacting the sea level salinity. आपका climate change भी बहुत ज्यादा impact करता है sea level salinity को. कैसे impact करता है? Like for example, with climate change there is more melting of ice that is happening. More and more ice that is melted, और ज्यादा मेल्टिंग की वजह से जो भी एरियाज में ज्यादा सैलिनिटी थी, वहां पर सैलिनिटी ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है. देन ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा बारिश हो, और ज्यादा बारिश से ज्यादा पानी नदियों से समुद्र में ऐड हो, और रिवर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, जहां से समुद्र में salinity salts add होते हैं. Okay, so what is the distribution of salinity? So when we say the distribution, the salinity rises with depth at high latitudes. So basically high latitudes की अगर हम बात करें, so whenever there is more salinity, whenever there is more salinity, what will happen? Your water will become denser, and when the water will become denser, it will sink. वो नीचे की ओर बैठेगा क्योंकि पानी भारी हो जाएगा.
तो हमारे हाई लैटिट्यूड एरियाज में क्योंकि यहां पर फ्रेश वाटर एडिशन भी हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर से स्नो पिघल रही है, सो फ्रेश वाटर एडिशन कहां से हुआ? आपका मेल्टेड स्नो से हुआ, प्लस जो भी सलाइन वाटर था क्योंकि वो हेवी होने की वजह से नीचे की ओर बैठेगा समुद्र में, इसलिए आप देखोगे कि सैलिनिटी हाई लैटिट्यूड एरिया में बढ़ती जाएगी एज यू गो इन डेप्थ. अच्छा, it rises at a maximum of 35 meters in middle latitude and then falls. The subsurface salinity is lower towards the equator. अब इक्वेटर पर ठीक उल्टा होता है. इक्वेटर पर डेप्थ में आपका सैलिनिटी कम होगी बिकॉज आपका एक तो ओवरऑल इवेपोरेशन ऊपर ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स ज्यादा सैलाइन लेयर्स आपको ऊपर मिलेंगी कंपैरेटिवली, कंपैरेटिव सेंस में मैं कह रहा हूं. और ओशन इक्वेटोरियल रीजन में आपके ओशन करंट्स और अंडर वाटर ओशन करंट्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, सो जो भी ठंडा पानी आपके पोलर रीजन से नीचे की ओर सिंक करेगा वो धीरे 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 इक्वेटर की ओर मूव करेगा, बिकॉज इक्वेटर से ऊपर पोलवर्ड्स, इक्वेटर से ऊपर पोलवर्ड्स आपके ओशन करंट्स मूव ऑलरेडी कर रहे हैं. सो देयर विल बी अ साइकिल ऑफ ओशन वाटर दैट विल स्टार्ट लाइक दिस. ये वाला पोर्शन आपका पोल है, ये आपका इक्वेटर है. सो द कोल्डर वाटर विल स्टार्ट सिंकिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर slowly and slowly, and then the ocean water from on the top of the equator is moving towards the pole. Then horizontal distribution की अगर हम बात करें, so average salinity है oceans का 33 to 37 grams. The highest salinity of ocean is observed between the tropics. And the salinity slowly decrease as we move towards the north. Then if we talk about the regional distribution of water salinity across the ocean, so different ocean में what is the difference in the salinity? So for example, the salinity in Pacific, it varies in Pacific mainly due to its larger shape and vast aerial extent. इतने बड़े साइज की वजह से जो आपके पैसिफिक ओशन की सैलिनिटी है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है. किसी पार्ट में जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहां सैलिनिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, पोलर रीजन में और इक्वेटोरियल रीजन में सैलिनिटी कम होगी. सो यहां पर सैलिनिटी बहुत कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा वेरी करती है. देन अटलांटिक ओशन में ऑन एन एवरेज सैलिनिटी मेंटेन्ड रहती है आपका 36 to 37 ग्राम्स. देन सैलिनिटी ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में भी आप देखोगे सैलिनिटी ऑन एन एवरेज 35 ग्राम्स के आसपास रहता है और 35 पीपीटी. ओके, अब ये सैलिनिटी इंडियन ओशन रीजन में स्पेसिफिकली क्यों है? बिकॉज इन इंडियन ओशन रीजन यू हैव अ वेरी लार्ज रिवर सिस्टम्स विच आर ब्रिंगिंग फ्रेश वाटर. सो जहां पर भी फ्रेश वाटर एडिशन होगा वहां पर ओवरऑल सैलिनिटी कंपैरेटिवली कम ही रहती है. ठीक है, और अगर हम इंडियन ओशन के दो इंपॉर्टेंट सीज को कंपेयर करें, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, सो कंपैरेटिवली आपका अरेबियन सी ज्यादा सेलाइन है इन कंपैरिजन टू बीओबी. रीजन? बिकॉज मोर रिवर्स आर कमिंग हेयर इन बीओबी.
ठीक है, ज्यादा नदियां यहां पर बीओबी, बे ऑफ बंगाल में आती हैं। देन सैलिनिटी ऑफ अदर एरियाज, नॉर्थ सी जो है हमारा, वहां पर ज्यादा सैलिनिटी देखी जाती है बिकॉज द इन्फ्लक्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। सो हमारे, इफ देर इज अ इंपॉर्टेंट ओशन करंट, now guys we will study a important environmental problem that is impacting the ocean. The problem is ocean acidification. So according to the National Oceanic Atmospheric Administration of USA, ocean acidification refers to a reduction in the pH of the ocean over the extended period of time. यानी जब ओशन का पीएच लेवल कम होता जाएगा, आपका ओशन ज्यादा एसिडिक बनता जाएगा। ठीक है, वी ऑल नो दैट द पीएच स्केल varies from 0 to 14. So as you move towards 0, the water is more acidic in nature. So the main reason for ocean acidification is the rising CO2. So in the era of industrialization, in the era of global warming, we are having more and more CO2 being released in the ocean. And ओशंस आर बेसिकली द कार्बन सिंक्स। यहां पर जितना भी कार्बन आप प्रोड्यूस करते हो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट कार्बन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओशन। सो द ओशनिक अपटेक ऑफ द एक्सेसिव CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज द मेन रीजन, और हाउ इट इज डिफाइंड एज ओशन एसिडिफिकेशन। सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन? सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग। किस वजह से इंक्रीज हो रहा है? वी ऑल नो दैट देयर इज मोर एंड मोर फ्यूल कंबशन हैपनिंग, डिफॉरेस्टेशन कम हो रहा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, स्टबल बर्निंग, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, देन वॉल्केनिक एक्टिविटी, ऑल दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से ओवरऑल CO2 आपका एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। अब जितना ज्यादा आपका एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा CO2 अवेलेबल रहेगा ओशन में एब्जॉर्ब होने के लिए, बिकॉज ओशंस आर द बिगेस्ट कार्बन सिंक। ओशन आर द बिगेस्ट कार्बन सिंक। सो जितना ज्यादा CO2 आपका ओशन एब्जॉर्ब करेंगे, उसका ओवरऑल पीएच वैल्यू कम होता जाएगा। जितना ज्यादा पीएच कम होगा ओशंस का, उतना ओशन एसिडिक बनता जाएगा। Now, what will be the effect of ocean acidification? So there will be more CO2 in the atmosphere, causing more pressure on the ocean to trap CO2. Then increase acidity of the ocean will decrease the metabolic rate and immune response of many marine organisms. जितना ज्यादा पानी एसिडिक होगा, आपके ओशनिक स्पीशीज का मेटाबॉलिज्म उतना ही स्लो होता जाएगा। जितना ज्यादा उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, उनका इम्यून सिस्टम स्लो होगा, उसका एक स्ट्रेट अवे इंपैक्ट मरीन ऑर्गेनिजम्स पर पड़ेगा। और जैसे ही मरीन ऑर्गेनिजम्स पर इंपैक्ट पड़ेगा, द कंप्लीट इकोसिस्टम, द मरीन इकोसिस्टम विल कोलैप्स।
then life of corals gets affected. जो एक important support system क्रिएट करता है वो है कोरल रीफ्स. सो द लाइफ ऑफ कोरल विल गेट इम्पैक्टेड. इट विल फर्दर लीड टू कोरल ब्लीचिंग. Then when more acidification of oceans will happen, it will destruct many marine species, and thereby it will impact the fishes of the ocean. जितना ज़्यादा फिशेस इम्पैक्ट होंगी ओशन की, उतना ही ज़्यादा लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगा उसके. द सोशल इम्पैक्ट विल बी मच मोर हायर. देन because of ocean acidification, calcification of organisms will also be impacted, because like all those organisms which are crustaceans. What are crustaceans? जो बेसिकली क्रस्ट में रहते हैं, जो कि जिनकी स्किन जिनकी आउटर बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है. तो जितना ज्यादा CO2 अपटेक होगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन में उन ऑर्गेनिजम्स को दिक्कत आएगी. लाइक ऑयस्टर्स, क्रैब्स, इन सब को प्रॉब्लम होगी. देन movement of ocean water. So let us very quickly see that what are the different types of movement which are recorded in our ocean water. So there are basically three forms of movement: waves, tides and currents. एक एक करके तीनों movements को समझते हैं. Waves is nothing but a rise and fall of ocean water, kind of oscillatory movement. ठीक है, एक particular interval में जब पानी आता है और गिरता है, इसको ओशन वेव्स कहते हैं. द मेन रीजन फॉर वेव्स आर द फ्रिक्शनल ड्रैग ऑफ द एयर स्लैश विंड. जो एयर और विंड का फ्रिक्शनल ड्रैग होता है, दैट इज द मेन रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ वेव्स. सो ज्यादातर ऑल द वेव्स आर हॉरिजॉन्टल इन नेचर. आपने देखा होगा समुद्र की लहरें जिसे कहते हैं, इट इज very common in any sea coast. So it is a kind of a energy that moves but not the water. So it is a movement of energy that moves the particle to particle in the water. This energy for the waves is given or derived by the wind. Raised part of the waves are called as the crest, whereas the low points are called as the trough. ये आपने पढ़ा होगा, crest and troughs. Then the next movement is tides. अब ये tides waves से अलग है. Now in order to understand tides, in a very layman's language, tide को समझते हैं ना in a layman's language. So imagine there is a sea coast. अब in the sea coast, if you have spent some time on the sea coast, you will see now this is the land, this is the sea. So आप देखोगे समुद्र का पानी दिन के एक टाइम पर बहुत आगे तक आ जाएगा और इस लैंड को कवर कर लेगा. And in the same time there will be a level where this water will further reduce. So whenever the water reduces is known as the low tides, and whenever the water comes towards the land it is known as the high tide. Low tide and high tide. All right. So tides, they are based on frequencies. So tides can even occur at times 2 times or 3 times a day, but they are the smaller tides. असली में टाइड्स किसे कहते हैं? जो डायरूनल होती है, यानी दिन में 2 बार होती है.
In a day, you will receive one high tide and one low tide. Now, what is the reason for the low tide and high tide? The main reason is the gravitational pull of the sun, moon, and the earth. So, we have earth, we have sun, and we have a celestial body moon. So whenever all these three celestial body they comes in a straight line, अब ये दोनों मून एंड सन, इन दोनों का एक ग्रेविटेशनल पुल पड़ेगा आपका अर्थ के ऊपर. अच्छा, टेल मी विच बॉडी विल हैव मोर ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ? क्या सन ज्यादा पुश ग्रेविटेशनल पुल देगा या मून ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल देगा? द आंसर इज मून, बिकॉज इट इज मोर क्लोजर. Okay, the answer is because it is more closer, and that is why moon will have a more impact of the gravitation. So this type of tides are known as the spring tides and neap tides. Neap tides are where the sun, moon and earth are 90 degrees. Okay, the next is ocean currents. The next movement of ocean water is ocean current, and this is in fact one of the most important movement on the earth circulation. So what is ocean current? How we can define ocean current? So basically the movement of ocean current in one particular direction over a long distance. So movement of ocean water in one particular direction in a long distance is called as the ocean currents. So generally, at what speed the ocean current moves? Somewhere around 5 to 8 kilometer per day. This is the speed of the ocean current. So overall, the speed of ocean current is very slow. So there are some primary forces that govern ocean currents, and then there are some secondary forces that govern ocean current. So primary force, एक important force जिसकी वजह से ocean current move करते हैं, that are the planetary winds. The planetary winds. So these are the primary forces. Then insolation, sun's insolation is also one reason. Like how sun's insolation plays an important role? Whenever there is more sunlight which is falling on equator, so due to this more heating, the water on the equator will expand. पानी expand करेगा, बहुत ज़्यादा expand नहीं करेगा, बहुत visible expansion नहीं होगा, but overall पूरे equator पर there will be more heat and more expansion. Because of this, there will be a very slight gradient that will run towards equator, towards the poles. Okay, Indrajit, this is basically a current affair supplement session for mains exam. So यहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं मेंस में जितने भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट टॉपिक से, वो हम इस वीकली सीरीज में कवर कर रहे हैं. If you want to understand that how to cover current affairs, you can join Unacademy with the code Srirams. With this code, you will get a flat 25% off. Okay. And there we will take current affairs very holistically. Okay. So atmospheric circulation,
the frictional drag of the winds, planetary winds, Coriolis force, all are important forces that govern global wind circulation. Like आप ओशन करंट्स का मैप एटलस में खोल के देखिए, जितने भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ओशन करंट्स हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स राइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वो अपने मूवमेंट के राइटवर्ड बेंड करते हुए रोटेट कर रहे हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. द सेम थिंग इज वाइस वर्सा विद द सदर्न हेमिस्फेयर. Then guys, what are the secondary factors that impact the flow of currents? The secondary forces that impact the flow of currents are temperature, salinity, then the ocean currents. Vertical motion is also affected by the differences in the water density. High salinity water is with higher density will move towards a lower salinity area. Okay, so because the water that is denser sinks and the water is lighter rises. So आप देखोगे इसकी वजह से ग्रेडियंट बन गया, salinity के डिफरेंस की वजह से there is a gradient. So a heavy water will sink. ठीक है, जो पानी हेवी होगा, जो ज्यादा डेंस होगा वो सिंक करेगा, और जो पानी लेस डेंस होगा वो राइज अप करेगा. ओके, इट विल राइज अप. सो देयर इज अ काइंड ऑफ अ ग्रेडियंट दैट विल अलाउ द ओशन वाटर टू मूव फ्रॉम अ लो सलाइन एरिया टुवर्ड्स अ हाई सलाइन एरिया. देन climate change. This is also something that is impacting the global ocean current movements. So how do we define climate change? When greenhouse gases are trapping more energy, the oceans are absorbing more heat, and as a result, the temperature of oceans are rising, the sea level are rising. So the changes in temperature brought by climate change will lead to alteration in the climate change patterns. Global climate change patterns are changing, जिसकी वजह से आपके रेगुलर ओशन करंट्स की मूवमेंट इंपैक्ट हो रही है. द अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन इज लूजिंग इट्स स्टेबिलिटी एंड इट इज क्वाइट लाइकली टू डिक्लाइन. अब अटलांटिक मेरिडोनियल सर्कुलेशंस क्या है? अटलांटिक ओशन में यू विल फाइंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मूविंग टुवर्ड्स यूरोप, and from there one part is bifurcated as Canary current, then equatorial current, and then this again Gulf Stream. So ये तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो गया. सदर्न हेमिस्फेयर में बिल्कुल ठीक उल्टा एक ऐसा ही सर्कुलेशन मूव कर रहा है. यहां पर आपका ब्राजील करंट है, यहां पर आपका ईस्ट अफ्रीकन वेस्ट अफ्रीकन करंट है, and then you have the north equatorial current and the counter equatorial current. So climate change की वजह से there is a direct impact on the movement of these currents. Now when this ocean current circulation stops, it will further trigger many adverse climatic effect on different parts of the world, especially Europe.
यूरोप इज फेसिंग ड्राउट्स, यूरोप इज फेसिंग हीट वेव्स। ये सब कुछ यूरोप में हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस दैट इज हैपनिंग इन द अटलांटिक मेरिडोनियल सर्कुलेशन। देन व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ओशन करंट्स? एक ओशन करंट्स कैसे इंपैक्ट करता है? सबसे पहले एक लोकल क्लाइमेट क्रिएट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ कोस्ट और इस कोस्ट के पास से अगर एक वार्म करंट ट्रैवल कर रहा है तो उस वार्म करंट के इंपैक्ट से आपकी हवा वार्म हो जाएगी, एंड विद दैट वार्मथ द एरिया विल आल्सो हैव अ वार्म एयर, वाइस वर्सा फॉर अ कोल्ड करंट। Then rains and desert formation. Now warm ocean currents, कहीं पर भी गर्म पानी जब कोस्ट के पास आएगा, so it will cause more rains in the coastal areas. It can impact the local winds and it can still brings rains even in the interior. Whereas if there is a cold current and more severe cold current around some country, the area will become more cold and it will turn it will aggravate the sinking air की वजह से वहां पर desert formation होने लगेंगे। Then effect of fishing. Whenever a warm current and cold current meets, तो जो पानी, जो मिक्सिंग की वजह से जो पानी क्रिएट होता है वो एक न्यूट्रिएंट रिच पानी होता है। वहां पर वार्म एरियाज के न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, कोल्ड एरिया के न्यूट्रिएंट भी आ जाते हैं और एक बैलेंस ऑक्सीजन सप्लाई होती है। सो व्हेनेवर देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ वार्म करंट एंड कोल्ड करंट हैपनिंग, दिस विल बी द वर्ल्ड्स बेस्ट फिशिंग जोन्स। क्या बन जाएगा? ये वर्ल्ड्स बेस्ट फिशिंग जोन्स वहां पर बन जाएंगे। देन ocean currents also impact the navigations. Like, it is easier for the ships to follow the direction of the ocean currents in the water because it will help them to save fuel. Obviously, when you are floating against the direction of the ocean current, there will be more fuel combustion that will happen. Okay, so affects the navigation. Then moderating impact. I hope am I audible now? So moderating impact, like if you are aware about the North Atlantic drift, अब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपका नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से होता हुआ टुवर्ड्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप पर जाता है, टुवर्ड्स द ब्रिटिश आइल्स और ब्रिटिश आइलैंड। सो इट विल ब्रिंग ऑल द वार्म वाटर फ्रॉम the tropical areas of Atlantic Ocean and it will drive that ocean water towards the cooler temperate region. So whenever there is a warm water coming on the area, it will basically tend to have a moderating impact. इसका एक बहुत ही ज्यादा moderating impact उस जगह के कोस्ट पर होगा। So तभी आप देखोगे इंग्लैंड, जो कि एक हायर ट्रॉपिकल कंट्री
में है, एक हायर टेम्परेट कंट्री है, सॉरी हाई लैटिट्यूडनल कंट्री है, डिस्पाइट उसके सेम लैटिट्यूड में यू विल फाइंड ऑल अदर नेशंस आर मच कूलर. उसके आप फॉलो करो मैप पे, ब्रिटिश को देखो, ब्रिटिश इंग्लैंड को देखो कहां पर लोकेटेड है, और उसके साथ में फॉलो करो, आप देखोगे बाकी सारे एरियाज बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली ठंडे हैं, ठंडे इलाके हैं. बट ब्रिटिश और ब्रिटेन कंपैरेटिवली वार्मर है, जिसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है. ये किस वजह से हो पाता है? ये आपका ओशन करंट्स की वजह से हो पाता है. देन लेट अस सी हाउ क्लाइमेट चेंज एंड ओशन सर्कुलेशन आर लिंक्ड. सो हमें पता है द मास फ्लो ऑफ वाटर और करंट्स आर essential to understand how the heat energy moves between earth, water body, land mass and atmosphere. इन तीनों के बीच में एक important connect है. Okay, and 71% of the ocean is covered with water, and out of the total water 97% of that water is in the oceans. So ocean play a very important role in storing and transferring the heat across the globe. So ocean currents की वजह से ही हमारे एनर्जी सरप्लस रीजन कौन से हैं? वो सारे रीजन जहां पर सन का एम्पल एनर्जी मिलती है. सन की एम्पल एनर्जी आपका बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में पड़ने वाला जो समुद्र है, यहां पर यू विल हैव द एम्पल सन एनर्जी, सो द ओशन वाटर हेयर विल बी वार्म. सो ओशन करंट इज अ मैकेनिज्म ऑफ द नेचर टू रीडिस्ट्रीब्यूट दैट हीट इन द लेस डेफिसिट और लेस एनर्जी सरप्लस रीजन और मोर एनर्जी डेफिसिट रीजन. So the movement of this heat through local and global circulation impacts the local weather condition, impacts the temperature extremes. It helps the mother nature to stabilize the global climate patterns. Then obviously ocean currents will also impact the marine life. आपकी marine life straight away ocean current की वजह से ही impact होगी. Like some fishes, they will breed, they will spawn only in particular temperature. वो अंडे एक particular temperature पर ही दे सकते हैं, और अगर ocean water का temperature maintain नहीं रहा, what will happen? Your marine life will be impacted. Coral reef के बारे में मैंने आपको बताया था कि coral bleaching is a very important problem that our marine ecosystem is facing. Then accelerated movement of water masses. Then impact on carbon cycle. So the Antarctic winds strongly affect the breakout and melting of ice. जितना ज्यादा आपका हवा गर्म होगी, उतना ज्यादा आपके बर्फ उतनी जल्दी पिघलना शुरू करेगी, जिसका इम्पैक्ट आपके एल्गीज पर पड़ेगा. दैट मीन्स व्हेन द आर्कटिक Then let us study the impact of climate change on ocean. तो सबसे बड़ा impact है वो है temperature rise का. Whenever there is a temperature rise, how it will impact the ocean?
With rise in temperature, the sea level will start rising because more and more ice shelves will be melting. आपके both the continents, Arctic Ocean and Antarctic Ocean, both will witness more and more melting of ice, and with this melted water, the average sea level will rise. Like for example, there are many countries like Maldives facing this problem of rising sea level. The capital of इंडोनेशिया ने अपना कैपिटल चेंज कर दिया है बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड दैट बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड जकार्ता, अ गुड पोर्शन ऑफ जकार्ता विल बी ड्राउन्ड, और माना जा रहा है 2050 तक मोर देन 40% ऑफ द जकार्ता विल बी अंडर वाटर, एंड इंडोनेशिया हैज शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम जकार्ता नाउ. So imagine that this sea level rise is such an important role, or it is such an important impact on the ocean. Then with the rise in temperature, more and more CO2 will be absorbed. इसकी वजह से what will happen? Ocean acidification. What will happen? Ocean acidification. Then when more oxygen level or more CO2 will be absorbed by the ocean, the oxygen level in the ocean will start falling. देख रहे हो, सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. और once this negative cycle starts, ये नेगेटिव साइकिल बहुत सारे और साइक्लिक प्रोसेसेस को ट्रिगर करती है और आपका फर्दर इम्बैलेंस क्रिएट करती है. अब जब ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेंगे, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मरीन लाइफ पर पड़ेगा, मरीन फिशेस पर पड़ेगा. देन इसकी वजह से आपके ओशन करंट्स के मूवमेंट भी सीधा इंपैक्ट होंगे. द आर्कटिक सर्कुलेशन, द आर्कटिक मेरिडोनियल सर्कुलेशन, जो आपने अपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा या आपने अपने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कैसे मूवमेंट ऑफ ओशन, द अटलांटिक ओशन के इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स विल आर स्लोइंग डाउन. उनके स्लो डाउन की वजह से डिफरेंट माइक्रो क्लाइमेट्स वर्ल्ड में डिफरेंट प्लेसेस पर चेंज हो रहे हैं. पिछले 3-4 साल से आप देखोगे देयर इज एक्यूट हीट वेव्स विच इज विटनेस्ड इन यूरोप के लोग मर रहे हैं हीट वेव से. वहां पर जब टेम्परेचर 40 क्रॉस करता है, वहां के लोग विथस्टैंड नहीं कर सकते. देन फटाफट बात कर लेते हैं कोरल रीफ. कोरल रीफ आपको पता ही है एक इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे ओशन में. इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहा जाता है. कोरल रीफ को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस भी कहा जाता है. ओके, अब ये कोरल रीफ होते क्या है आप देख रहे हो, मैंने एक इमेज ऐड करी है. ये जो रंग बिरंगे रॉक्स आप पानी के नीचे देख रहे हो, बेसिकली ये लिविंग रॉक्स हैं. ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है. इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, कोरल पॉलिप्स और जूजैंथले. एक एल्गी है जूजैंथले, इनके बीच में. सो कोरल पॉलिप की बॉडी बनी होती है एक हार्ड कार्बन शेल से. ओके, और उसी के ऊपर ये जूजैंथले एल्गी आता है, और ये ज्यादातर फोटिक जोन में अवेलेबल होते हैं. फोटिक जोन किसे कहते हैं? जहां पर सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है. जैसे आप यहां देख रहे हो, यहां पर चारों तरफ उजाला है समुद्र के नीचे, ये एक फोटिक जोन है. तो जूजैंथले और कोरल पॉलिप एक दूसरे के साथ ऐसे रहेंगे कि जिसमें दोनों का फायदा. कोरल पॉलिप को क्या मिलता है? जब जूजैंथले फोटोसिंथेसिस करेगा तो कोरल पॉलिप को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और जूजैंथले को रहने के लिए घर मिल जाएगा, वो शेल्टर मिल जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर आपका कोरल पॉलिप ग्रो करेगा. इसलिए धीरे धीरे विद टाइम आप देखोगे कोरल रीफ्स फॉर्मेशन होंगे. सबसे पहले ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरियाज में डेवलप होते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंडीशन कोरल्स को ग्रो करने के लिए क्या है? फोटिक जोन, सनलाइट की अवेलेबिलिटी. तभी कोरल रीफ वहां पर ग्रो कर पाएंगे, तभी फोटोसिंथेसिस होगा.
सो स्लोली स्लोली ये किसी आइलैंड के चारों तरफ या किसी कोस्ट के आसपास ग्रो करेंगे, जिसको हम क्या कह देते हैं, फ्रिंजिंग रीफ। आप यहां पर इस डायग्राम में देख सकते हो फ्रिंजिंग रीफ किसे कहते हैं, बिकॉज उन्हें एक सरफेस चाहिए। तो वो सरफेस या वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इस आइलैंड का जो शेल्फ होगा वहां पर असिस्ट करेगा कोरल रीफ को ग्रो करने का। फिर स्लोली आप देखोगे किसी वजह से, ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन की वजह से, या तो ये आइलैंड सबडक्ट हो जाए, सबसिडेंस हो जाए, या किसी भी तरह का एक गैप क्रिएट हो जाए रीफ, कोरल रीफ के बीच में और इस आइलैंड के बीच में। इस तरह की फॉर्मेशन को बैरियर रीफ कहा जाता है। ठीक है, जहां पर बीच में एक आप देखोगे वाटर बॉडी है जिसको लगून भी कह दिया जाता है ज्योग्राफी में। ये सब आपने कवर करा होगा आपके ज्योग्राफी में। ओके, सो बैरियर रीफ एंड लगून। देन आपका आ जाता है अटॉल्स। अटॉल्स बेसिकली एक सर्कुलर फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स को कहते हैं। जब कोरल रीफ ऐसे जमा होने लग जाए और एक सर्कुलर फॉर्मेशन बना दे, उसे अटॉल्स कहते हैं। जैसे लक्षद्वीप, आपको पता है लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है। वो ऐसे ही किसी कोरल एक्टिविटी से बना है, और लक्षद्वीप को अटॉल भी कहा जाता है बिकॉज वहां पर मोस्ट ऑफ द आइलैंड सर्कुलर नेचर के हैं। ठीक है, तो जितना भी फॉर्मेशन हुआ है वो कोरल रॉक्स की वजह से हुआ है, जिनको बायो रॉक्स भी कहते हैं। तो व्हाट आर द आइडियल एनवायरमेंट फॉर कोरल रीफ? फर्स्ट, शैलो वाटर। सबसे पहले पानी शैलो होना चाहिए, बिकॉज शैलो वाटर में ही आपकी सनलाइट पेनिट्रेट कर पाएगी। दे नीड, zooxanthellae नीड इनफ सनलाइट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। देन सेमी हार्ड और हार्ड सरफेस। कोरल्स को ग्रो करने के लिए हार्ड सरफेस चाहिए होता है, तभी दे गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सीमेंटेशन, कॉम्पैक्शन और सॉलिडिफिकेशन। ओके, देन क्लियर एंड वार्म वाटर। पानी का साफ होना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्लीन वाटर और क्लियर वाटर विल हेल्प देम टू ब्रीद। कोरल सांस ही नहीं ले पाएगा अगर पानी क्लीन नहीं हुआ। तभी आप देखोगे कोरल्स आर नॉट इजीली अवेलेबल ऑन रिवर माउथ। रिवर माउथ और इन सब जगहों पे कोरल्स आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, देन सलाइन फिल्ड वाटर्स। जो पानी है वहां पर सलाइन होना चाहिए, बिकॉज द पॉलिप्स नीड कैल्शियम फ्रॉम द सॉल्टी वाटर टू प्रोटेक्ट देयर स्किन्स। सो पानी का स्केलेटन का सलाइन होना, पानी का सलाइन होना भी बहुत जरूरी है। देन रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वहां पर फ्रेश सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए। ज्यादातर वो फ्रेश सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहां से आते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आते हैं, जिसकी वजह से कोरल्स मल्टीप्लाई कर पाते हैं। देन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल लाइफ सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन में आएगा। सो कोरल लाइफ इज थ्रेटेंड बाय राइजिंग वाटर टेम्परेचर कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। दे आर वन ऑफ द फर्स्ट इकोसिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ इकोलॉजिकल कोलैप्स। सबसे ज्यादा थ्रेट अगर कहीं पर है वो है कोरल लाइफ को। मरीन इकोसिस्टम में सबसे पहले डिस्ट्रक्शन किसी इकोसिस्टम का होगा तो वो होगा कोरल्स का, और ये हो भी रहा है, बिकॉज जो रिजल्ट है वो आप देख रहे हो डाइंग कोरल्स, जिसको कोरल ब्लीचिंग भी कहा जाता है। जहां पर ओशन वाटर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ऑन एन एवरेज कोरल्स को टेम्परेचर चाहिए होता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बट ऑन एन एवरेज आप देखोगे ओशन वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ वन इवन
दैट इज क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से फर्दर इंपैक्ट हो रहा है। देन कोरल ब्लीचिंग। व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? नाउ इन कोरल ब्लीचिंग बेसिकली द कोरल्स और द जूज़ैंथले डज नॉट सर्वाइव। जो आपका एल्गी है जो कोरल्स के ऊपर बैठता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मरने लगता है और कोरल अपना कलर लूज करने लगता है। एंड दैट लॉस ऑफ कलर गिव्स अ वाइटिश अपीयरेंस टू द कोरल रॉक, और तभी उसे कहा जाता है कि ब्लीच हो गया कोरल। ब्लीच का मतलब ये नहीं कि वहां ब्लीच डाल दिया गया, उस कोरल रॉक के वाइट होने की वजह से उसको कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज कोरल ब्लीचिंग? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका राइज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा, कोरल के सहने की लिमिट से क्रॉस हो जाएगा, कोरल मरने लगेंगे और वो ब्लीच होने लगेगा। देन सी वाटर पोल्यूशन। इतना ज्यादा पोल्यूशन हम करते जा रहे हैं अपने सीज को, लाइक वी आर पोल्यूटिंग विद माइक्रोप्लास्टिक्स, वी आर पोल्यूटिंग विद industrial waste, chemicals, all these waste which are discharged in the oceans, they block the pores of the corals. कोरल के रोम छिद्र जिसे कहते हैं ना, the spores of the coral, they are blocked, जिसकी वजह से there is no proper exchange of nutrients and the breathing that happens with the coral, and ultimately they die. Then low tides. At times, because of the climate change, जो सी वाटर है वो बहुत पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से जो कोरल्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, हो जाते हैं नेचुरल एयर में, और नेचुरल एयर में ये सरवाइव नहीं कर पाते बिकॉज इनको सलाइन वाटर या वाटर के अंदर होना जरूरी है, एक मैंडेटरी कंडीशन है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई कोरल आर गेटिंग डिस्ट्रक्टेड। कोरल रीफ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस जीएस मेंस के लिए, इसलिए मैं ये सारे पॉइंट्स करा रहा हूं। थोड़ा सा ये आई नो दैट इट इज टचिंग द स्टैटिक एरिया, बट द रेलेवेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मेंस में आप यही सब लिखोगे। देन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। हेल्दी कोरल रीफ्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिशिंग, टूरिज्म इंडस्ट्री, प्रोवाइडिंग अ गुड जॉब्स, good livelihood of the people are dependent. जैसे कंट्रीज लाइक मालदीव्स, मालदीव्स में कोई प्रोडक्शन थोड़ा होता है जिसकी वजह से वो कमाएंगे। ऑल द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ मालदीव्स आर डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। देयर आर मेनी सच कंट्रीज। हमारे इंडिया में देख लो, जितने भी कोस्टल सिटीज हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन वन थिंग, दैट इज tourism. Then biodiversity significance. Now what is the biodiversity significance? Now according to the National Oceanic Atmospheric Administration, coral reefs are the home to various marine biodiversity. वर्ल्ड के लगभग 4000 फिशेस, स्पीशीज ऑफ फिशेस, 800 स्पीशीज ऑफ कोरल्स, they support this. And that is why they are known as the rainforest of the ocean. तभी तो उनको बोला जाता है rainforest of ocean. Then it act as a buffer against natural disaster. जैसे floods हैं, सुनामी हैं, so they act as a wave barrier. तो waves की intensity, whenever you have a healthy development of coral along the coast, वहां पर सुनामी का इंपैक्ट कम हो जाएगा, साइक्लोन्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा, फ्लड्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा, लॉस ऑफ सॉइल इरोजन और प्रॉपर्टी डैमेज भी इससे आप रिड्यूस कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाई कोरल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन in India, what are the conservation that we are taking for the protection of corals? So first we need to modify human activity so that we can reduce the damage to the healthy corals. हम कितना कम कर सकते हैं डैमेज कोरल्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है. Then we need some laws protecting the coral reefs. हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज की जरूरत है जो हमारे कोरल रीफ को प्रोटेक्ट कर सके. लाइक द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर कवर्ड है कोरल. शेड्यूल 1 के अंदर कवर्ड है.
That means nobody can destruct coral, nobody can damage coral because they have the highest degree of protection under Wildlife Protection Act. Then Environment Protection Act 1986. They are also given protection under this act. Then Coastal Regulation Zones under Environment Protection Act, इसके अंदर भी आता है ये. And then Marine Protected Areas. We have declared many corals as marine protected areas. Next is ocean pollution. One major problem that the world is facing is ocean pollution. So ocean pollution basically is a complex mixture of toxic metals, manufactured chemicals, plastics, urban industrial waste, petroleum, pesticides, everything that we are dumping. Either the industries on the coastal areas, they are carrying out this dumping directly into the sea, or it is happening indirectly. Like for example, something that we are dumping into the river. Don't you think that ultimately that dump will reach the ocean? Finally, वो सारा कूड़ा कहाँ पहुँच रहा है? In the ocean only. And you won't believe that there are many domesticated activities which are also responsible for creating pollution in the oceans. Like for example, microplastics. You know that how this microplastic is reaching. Do you know that the cosmetics that we use today, like especially the girls, the scrubs and all these cosmetics, the face wash, so even men uses it. Some face wash has those microbeads. उनके अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे microbeads ऐड होते हैं. आपको पता है ज्यादातर केसेस में वो microbeads एक small minor प्लास्टिक से बनते हैं जो कि आपके स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं. अब जब भी आप यू विल वॉश ऑफ दीज कॉस्मेटिक्स, इट विल enter the drains, from drains it will enter the sewers, from sewers it will enter in the rivers without any treatment, and from that river it is reaching the ocean. और फिर वही माइक्रोप्लास्टिक्स जब ओशन में जाएंगे, या फिर एक तो तरीका ये हो गया, इस तरीके से माइक्रोप्लास्टिक्स जा सकते हैं, और भी कई तरीके से माइक्रोप्लास्टिक्स जा सकते हैं. जैसे मान के चलो आपने एक प्लास्टिक बॉटल को ओशन में फेंक दिया. अब वो प्लास्टिक बॉटल वैसे तो रहेगा नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द इम्पैक्ट ऑफ द वाटर इट विल स्टार्ट डिग्रेडिंग. हावेवर उसका डिग्रेडेशन का रेट बहुत स्लो होगा, बट डिग्रेड तो करेगा ना, धीरे धीरे टूटेगा, वेव्स के एक्शन से टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा. समझ रहे हो आप? सो इसकी वजह से वो छोटे छोटे प्लास्टिक्स में बढ़ जाएगा, और व्हेन इट इज ब्रोकन डाउन लेस देन 5 मिलीमीटर इट इज नोन एज माइक्रोप्लास्टिक. ठीक है, 5 mm से छोटा अगर प्लास्टिक का टुकड़ा समुद्र में पहुंच गया उसे माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं. इमेजिन अगर ऐसा छोटा सा टुकड़ा किसी फिश ने खा लिया, फिर उस फिश को एक बड़ी फिश ने खाया, और फिर बड़ी फिश को और बड़ी फिश ने खाया, एंड देन अल्टीमेटली ह्यूमंस ने उस फिश को कंज्यूम करा. सो ये प्लास्टिक उनकी बॉडी में अक्यूमुलेट करता है, जिसको आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, बायो अक्यूमुलेशन. ये प्लास्टिक्स उनकी बॉडी में अक्यूमुलेट करेगा, एंड देन व्हेन दिस प्लास्टिक इज accumulated in the tissues of the fishes, जो उनके टिश्यूज में जब फंस जाएगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा अपने डिफरेंट फूड चेन में, और ये अल्टीमेटली कैन रीच द ह्यूमंस एज वेल. अब जब फिश को हम कंज्यूम करेंगे, और जब डिफरेंट फूड लेवल्स पर डिफरेंट फूड चेन में ये माइक्रोप्लास्टिक्स ट्रैवल करेगा, उसे एक इंपॉर्टेंट टर्म दी गई है, बायोमैग्निफिकेशन. यस गाइस, सुना होगा आपने बायो अक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन, यही होता है. इसका इंपैक्ट ऑन फूड चेन, जैसे कि अभी मैंने बताया, इसका इंपैक्ट हेल्थ ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स. अब प्लास्टिक अगर आप खा लो, क्या आप उसे पचा पाओगे? आंसर इज नो. इसी तरीके से एक मरीन ऑर्गेनिज्म, एक फिश भी उस प्लास्टिक को
डाइजेस्ट नहीं कर सकती, दैट इज वाई इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. Then it will create ocean pollution and ultimately it will be impacting the human health. Final impact क्या होगा? The final impact will be on human health. All this plastic is carcinogenic. ये carcinogenic होता है, ठीक है. So this is the impact. Then impact on marine life, जैसे कि मैंने बताया. अच्छा, ज़्यादा pollution बढ़ने से ओशन में there will be less and less oxygen that will be available for the marine resources, because जब pollution ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस इम्पैक्ट होगा. फोटोसिंथेसिस इम्पैक्ट होने की वजह से ऑक्सीजन कम होगा और जो ऑलरेडी फिशेस एग्जिस्ट कर रही हैं वो भी ऑक्सीजन लेंगी और डिप्लीट करेंगी. इसकी वजह से ओवरऑल ऑक्सीजन लेवल्स में भी कमी आएगी और वो फर्दर आपके मरीन लाइफ को ट्रिगर करेगा. देन हार्मफुल एलिमेंट्स इन एनवायरनमेंट, जैसे एक नई रिसर्च है विच इज डन बाय द स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इन द US San Diego. They have confirmed that the ocean water pollution transfer to atmosphere in sea spray aerosol which can reach the people like beach goers, surfers and swimmers. क्या मतलब, क्या है ये रिसर्च? जितना भी आप छोटा छोटा पोल्यूशन पानी में फेंक रहे हो, जैसे मान के चलो आपने कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स पानी में रिलीज करे, वो हार्मफुल केमिकल्स एवेपोरेशन के थ्रू बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एयर में मिक्स हो सकते हैं और एयर में जब वो मिक्स हो गए तो इट विल स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट द ह्यूमंस अराउंड दैट एरिया. तो जो बीचेस पर लोग हैं टूरिज्म के चलते, सर्फर्स हैं, स्विमर्स हैं, वो स्ट्रेट अवे इनहेल करेंगे ये सब. सो दिस इज द हार्मफुल एलिमेंट्स in environment, how these pollution is reaching us. At present, microplastic scientists के according there is a estimate of 5 to 13 million metric tons of plastic pollution which is added in the ocean each year. इतना माइक्रोप्लास्टिक हम हर साल ऐड कर रहे हैं. और इमेजिन जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर माइक्रोप्लास्टिक होगा, यानी बहुत छोटा लेवल पर होगा, उसको तो हम मेजर भी नहीं कर पाएंगे, उसका तो कोई मेजर है ही नहीं हमारे पास. सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ओशन पोल्यूशन. देन व्हाट इज द मिटिगेशन? हम क्या ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करें जिससे मिटिगेशन, हम मरीन पोल्यूशन को कम कर सकें? सबसे पहला, हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना होगा. हमें वो सारे एफर्ट्स लाने होंगे जिससे ग्रीन हाउस गैसेस कम हो सके, स्पेशली वो सारे एफर्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है. देन इंक्रीज ऑक्सीजन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. हमें ज्यादा ऑक्सीजन को मॉनिटर करना होगा. डिफरेंट सी पॉकेट्स में ऑक्सीजन का क्या लेवल है. जैसे हैव यू हर्ड ऑफ डेड जोन्स? ऐसा कुछ सुना है, डेड जोन्स? अभी इंडियन साइंटिस्ट को भी बे ऑफ बंगाल में, द इंडियन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ डेड जोन इन बे ऑफ बंगाल. नाउ व्हाट इज अ डेड जोन गाइस? डेड जोन इज अ पॉकेट और अ पार्सल. Pocket of or a parcel, or you can say that it is a portion of the ocean water which do not have any oxygen available. वहां पर ऑक्सीजन लेवल हैज डिप्लीटेड सो ड्रास्टिकली दैट नो मरीन लाइफ कैन सर्वाइव. ऐसे जोन्स को डेड जोन कहा जाता है और द इंटेंसिटी and the availability of these dead zones are increasing. So हमें observe करना होगा. There is a need to observe all these dead zones. Then we have to create a awareness among the people, different stakeholders. ये नॉर्मल सी बात है. हमें एक्वाकल्चर प्रमोट करना होगा, फिशरीज के लिए अच्छा काम करना होगा ताकि लाइवलीहुड थ्रेटन ना हो. Then
global laws and policies. So what are the global laws that are working on marine pollution, उसको भी देख लेते हैं. In 1948, Harry Truman signed a law known as the Federal Water Pollution Control Act. ये अमेरिका ने लॉ बनाया, हेनरी ट्रूमन वहां के राष्ट्रपति थे, जो कि मरीन पोल्यूशन को यूनाइटेड स्टेट्स में कम करने के लिए काम करता है. एक बहुत बड़ा लॉ है और पूरे पैसिफिक ओशन में मरीन पोल्यूशन से टैकल करने के लिए लॉ काम में आता है. बाय द वे, आपको पता होगा पैसिफिक ओशन में हमने एक इतना बड़ा प्लास्टिक का आइलैंड बना दिया है पैसिफिक ओशन में. ठीक है, दैट प्लास्टिक आइलैंड इज somewhere around 10 million tons of plastic which is circulating, or which is basically because of the movement of the ocean current, it is being collected at one place. So imagine that what we are doing to our ocean. In 1972, Marine Protection and Research Sanctuaries was passed by the Council on Environmental Quality, which controls the ocean dumping. So ये ग्लोबल लॉज हैं, ग्लोबल क्या क्या हुआ है उससे रिलेटेड ये लॉज हैं. देन मारपोल 1973 एंड 78 में एक रिटन ट्रीटी साइन होती है जिसको मारपोल कहते हैं, जो कि उस पोल्यूशन को रोकता है जो कि आपके शिप्स के थ्रू होता है, ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से होता है. 1983 The International Convention for the Prevention of Pollution from the Ships, ये एक कन्वेंशन मारपोल के अंडर साइन किया गया जिससे मरीन पोल्यूशन कम कर सको, स्पेशली फ्रॉम द शिप्स. Then 1982 United Nations Convention on Laws of Seas was also established to protect the marine environment by governing states to control their pollution or the ocean. So guys, this is also very much important. You can expect a question this year in mains. Atlantic Meridional Overturning Circulation. So first of all, what is Atlantic Meridional Circulation? This is a large system of ocean currents that carry warm water from the tropics towards the pole. जो हमारे ट्रॉपिकल बेल्ट से पोलर रीजन के टुवर्ड्स जो ओशन वाटर लेके जाते हैं वो अटलांटिक एक सर्कुलेशन बनता है. दिस AMOC फ्लक्चुएट्स ईयर टू ईयर. सो जो ये ओशन करंट्स का सर्कुलेशन है, इट इज गेटिंग इंपैक्टेड. ये वार्म वाटर लेके जाता है, फिर ब्रिटिश आइल्स के पास जाता है, वहां पर गर्म पानी की वजह से बारिश होती है, फिर नीचे की टुवर्ड्स आता है कैनरी आइलैंड में, वहां पर ठंडा पानी बनता है, ठंडा पानी मिक्स होता है, वो नीचे की टुवर्ड्स आता है, स्पेन को ठंडा पानी मिलता है, और फिर इक्वेटोरियल करंट एंड काउंटर इक्वेटोरियल करंट की वजह से पूरा साइकिल कंप्लीट होता है. और इसके बीच में इसके बीचों बीच में एक सी है जिसको सरगैसो सी के नाम से जाना जाता है. ठीक है, देयर इज अ सी बिटवीन, इट इज द ओनली सी इन द ओशन विच इज बॉर्डरलेस. बिना बॉर्डर का एक सी है आपका यहां पर. अब जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ दिस ओशन करंट विल वीकेंस, उतना ज्यादा आप देखोगे डिफरेंट पार्ट्स में प्रॉब्लम होगी. अगर गर्म पानी यूरोप के टुवर्ड्स मूव ना कर पाया तो ज्यादा गर्म पानी का अक्यूमुलेशन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए में होगा, जिसकी वजह से ज्यादा साइक्लोनिक स्ट्रॉम्स डेवलप होंगे इस जगह पर, ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए में. ठीक है, देन आपके यूके में इसका इंपैक्ट क्या होगा, वहां पर ठंड ज्यादा होगी, मोर सिवियर विंटर्स विल कम इन दैट रीजन, एंड इन समर्स देयर विल बी हीट वेव्स, और उसकी वजह से बारिश भी कम होगी, तो ड्राउट्स यूरोप में बहुत नॉर्मल होंगे. इसलिए ये जो अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है redistribution of heat energy from one place to another. So the warm water transports that release of heat in the atmosphere as well as collecting and storing atmospheric carbon.
देन इसका एक इम्पैक्ट इंडियन ओशन रीजन पर भी है, ठीक है। इस अटलांटिक ओशन सर्कुलेशन का इम्पैक्ट इंडियन ओशन रीजन पर भी है, बिकॉज जितना ज्यादा ये वीक या स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा मूवमेंट ऑफ ओशन करंट इंडियन ओशन रीजन में भी स्ट्रॉन्ग या वीक होगा। सी, ग्लोब इज अ नेचर इज अ वन कनेक्टेड मॉडल, सारी चीजें एक तरीके से कनेक्टेड है। सो ये कनेक्शन कहीं पर भी ब्रेक करेगा, ये साइकिल कहीं पर भी ब्रेक करेगी, इसका इम्पैक्ट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होगा। अब अटलांटिक मेरिडोनियल सर्कुलेशन का एक पोर्शन इंपैक्ट करेगा आपके ईस्टर्न पैसिफिक ओशन को, जहां पर आपके कोल्ड करंट्स चलते हैं, और जब वो इंपैक्ट करेगा तो पूरे वर्ल्ड में एल नीनो वाला फिनोमिना ट्रिगर करेगा। लाइक अभी डिक्लेयर करा था ना, 4 जुलाई वाज डिक्लेयर्ड एज द वार्मेस्ट डे ऑफ एवर रिकॉर्डेड इन द लाइफ टाइम। अब तक का सबसे वार्मेस्ट डे, 4 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं। ह्यूमैनिटी के रिकॉर्ड में इससे गर्म दिन पूरे वर्ल्ड में कहीं पर ऑब्जर्व नहीं करा गया था, ऑन एन एवरेज बात हो रही है। सो ये किस वजह से हो रहा है, उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन एल नीनो भी है ऑब्वियसली, बट एल नीनो ट्रिगर कर रहा है क्योंकि अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग ट्रिगर कर रही है। अच्छा, एल नीनो की वजह से आपको भी पता है इंडिया के मॉनसून्स भी इंपैक्ट होते हैं, ठीक है। और माना जा रहा है कि 2023 के बाद इंडिया में एल नीनो ट्रिगर होगा, जिसकी वजह से अगले साल से यहां पर कम बारिश होगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बट यू नेवर नो, दीज सर्कुलेशंस कैन चेंज। सो दिस ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन इज द इक्वेटरवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ cold deep waters and the poleward transportation of warm and near surface water. So it has a very much it has a huge importance because it controls the ocean heat redistribution, it controls the atmospheric carbon dioxide level and hence play an important role in global climate. So ये सारी सर्कुलेशन एक तरीके से लिंक्ड है। अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के इंपैक्ट होने से आपका ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन भी इंपैक्ट होती है। देन गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अगर हम ओशनोग्राफी में देखें तो एक मिशन है डीप ओशन मिशन। लाइक जैसे कि आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया इस यूनिट के, अभी तक हमारे पास भी ओनली हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट 3% ऑफ द ओशन। अभी तक हमें सिर्फ 3% ओशन के बारे में ही पता है। देयर इज अ होल लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू बी एक्सप्लोर्ड। जैसे कल की न्यूज थी जो मैंने अपने फोन में पढ़ी, दैट देयर इज a hole that has been discovered in Indian Ocean that is extending beyond 1000 kilometers. एक बहुत बड़ा होल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, साइंटिस्ट ने, इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है आपके इंडियन ओशन रीजन में। सो इस तरह के मिशंस हेल्प करते हैं कैसे हम ज्यादा रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप कर सकें। So deep ocean mission will focus on the deep sea mining technology such as underwater robotics, underwater vehicles. ये underwater vehicles भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा ना, एक टाइटैनिक वो सबमरीन, the Titanic submarine that has imploded, एक्सप्लोड नहीं करी, वो implode कर गई, अंदर की तरफ क्रश हो गई। Then ocean climate change consulting services. All these things are the main target of the deep ocean mission. ये 2021 से 2024 का टाइम फेज है, ये फेज 1 है इस मिशन का। सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कोई भी ओशनोग्राफी से क्वेश्चन आता है, यू हैव टू मेंशन दिस, ओके। देन एक्सप्लोरिंग ईईजी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये हमें हेल्प करेगा ये मिशन कि किस तरीके से हम अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को मैनेज करें
एंड इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करें। ऑलराइट, डीप सी माइनिंग, जैसे यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमें मिलती है, वो है रेयर अर्थ मेटल। ऑलराइट, रेयर अर्थ मेटल, ये कुछ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं which are very, they have a very high economic value. Their industrial application is so important that it can give a huge resource boost to India. So exploring these polymetallic nodules will be enhanced by this deep ocean mission. So UN International सीबेड अथॉरिटी, इन्होंने हाल ही में इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है टू एक्सट्रैक्ट 7,000 स्क्वायर किलोमीटर लोकेशन ऑफ द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर, सो फॉर कंप्लीट 2023 और इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 25, सो हम 2025 तक और ज्यादा एक्सट्रैक्शन then it will promote research and development. It will help in the development of new technologies, innovation in the sector ranging from underwater vehicles to underwater robotics, and hence strengthening India's standing in the field of ocean research. Then boosting the blue economy. Now this is a new topic altogether. Blue economy is basically growing countries' overall economic progress by giving boost to blue economy that includes tourism, sustainable use of oceanic resources, developing trade and commerce in the ocean, etc., etc. Then Seabed 2030. This is also a very important project. Seabed 2030. This project is between the Nippon Foundation of Japan and the General Bathymetric Chart of the Ocean. It aims to bring together all available bathymetric data so that what is bathymetry? The ocean bottom. Ocean bottom में क्या क्या available है, that is known as the ocean bottom bathymetry. So basically, to carry out a research on the ocean bottom, this is used, and that is why it is important. Then significance of the ocean floor research. Now why ocean floor research is important? First of all, it will help us to understand the ocean circulation. It will help us to understand and strengthen marine ecosystem, to strengthen understanding of the climate. It will help to empower people all over the world to make important policy decisions, then to provide critical inputs for navigation. All these are the main significance of ocean floor research. Then guys, there is one similar project, that is OSTROM. OSTROM stands for Ocean Services Technology Observation Resource Modeling and Science. ये एक ही नाम है, OSTROM. It is a project which is comprehensive initiative that aims to enhance the understanding of the ocean
It focuses on improving ocean services, advanced technology, observation, assessing the ocean resources, developing models, conducting scientific research. All these are the objective of OSTROM. The project emphasizes the importance of ocean related data collection, analysis, modeling to support decision making, policy development, sustainable management of ocean resources, etc. All these things are covered here. Okay, so after doing 3 topics, I have done general ecosystem and environment. हमने इसको समझा. Then we have done biodiversity conservation. The third thing that we have taken was oceanography. So guys, जिसने भी ये तीनों टॉपिक्स नहीं देखे हैं, ये 2 वीडियोस में कवर हैं. ये दोनों टॉपिक मैंने फर्स्ट वीडियो में लास्ट वीक शुरू करा था. ठीक है, सैटरडे को लास्ट वीक आपको क्लास में मैंने ये पढ़ाया था. इसको देखने के लिए द प्लेलिस्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओशनोग्राफी मैंने आज कवर करा है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लीन एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि हमारा 4th टॉपिक है इस पूरी डिस्कशन का. ये पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट एरियाज मेंस पर्सपेक्टिव से मैं पढ़ा रहा हूं YouTube पर. एवरी सैटरडे देयर इज अ सेशन दैट इज फ्रॉम 10 to 12:30, 2.5 hours of session. Okay, so and Sunday Sanat sir will take his area. Okay, so at Sriram IAS we have a regular division of these sessions. Saturday I will take polity, environment and international relations, and Sanat sir will take on Sunday your science and tech, art and culture, economy and other miscellaneous areas. ठीक है, सो दोनों दिन 10 से 12:30 क्लास होती है. मेंस पर्सपेक्टिव से आपको आंसर राइटिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब्जेक्ट्स के, वो आपको यहाँ पर डिलीवर किए जाएंगे. सो लेट अस टॉक अबाउट एनर्जी. इट इज अ इंपॉर्टेंट एरिया, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, energy becomes a very important area. So clean energy and energy conservation is a very crucial aspect of understanding climate change and promoting sustainable development. आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में जितना भी एनवायरमेंटल डिसऑर्डर डिफरेंट पार्ट्स में क्रिएट हो रहा है, उसका मेन रीजन ही एनर्जी है. ओके, सो क्लीन एनर्जी रेफर्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि रिन्यू हो सकती है अगेन एंड अगेन, कुछ डिप्लीशन जहां पर ना हो, like solar, wind, hydro, geothermal. Now all these energies are clean because they have a less green gases emissions. They are less dependent on the fossil fuels. Okay, इनका डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल पर नेक्स्ट टू 0 है. So this type of energy is known as clean energy. Then energy conservation means using energy efficiently, reducing the wastage, adopting technologies and practices that can optimize the energy use. Like for example LEDs. This is a new technology that has significantly reduced the energy consumption. जो पहले के लाल बल्ब आते थे उनका एनर्जी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा था, अब हमने उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया है. Then these initiatives will play a very important role in mitigating the biggest problem that the humanity is facing, that is climate change. It will help us to reduce pollution, enhance energy security, and then fostering a greener and more sustainable future for our generations to come. So when it comes to the overall status of clean energy, we have some data. So in India overall is the 3rd largest producer of renewable energy in the world.
दुनिया का सबसे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, जहां पर टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 178.79 गीगावाट्स, या आप इसको 180 गीगावाट्स अप्रोक्सीमेटली भी आंसर में लिख सकते हो। ये हमारी प्रेजेंट स्टेटस है, फेब 2023 का डेटा है, एक इंपॉर्टेंट डेटा है। अभी हमारा जो टोटल एनर्जी कैपेसिटी स्टैंड्स एट 180 गीगावाट्स and 40% of our installed electricity capacity is coming from non-fossil fuel resources. That means 60% अभी भी हम fossil fuel resources पर dependent है। इसमें भी सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंस है हमारी coal based पर है, thermal based. Now, if we contribute or if we see the distribution of different clean energy, renewable energy, solar energy has the maximum contribution. 66 गीगावाट का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अभी एट प्रेजेंट सोलर का है, विंड 42.6, बायोगैस 10.2, हाइड्रो 4.9, लार्ज हाइड्रो इज 46.85, वेस्ट टू एनर्जी 0.55 and small hydro 4.9. And what is India's target? To increase the contribution of renewable energy by 450 gigawatts capacity by 2030, out of which 280 gigawatts will be just the solar. 280 gigawatts will be solar and 140 will be wind. सो टोटल आपका 420 गीगावाट्स होता है। बाकी 30 गीगावाट्स जो डिफरेंस है, द रिमेनिंग विल कम फ्रॉम ऑल दीज क्लीन एनर्जी। ओके, देन अकॉर्डिंग टू नीति आयोग देर आर डिफरेंट एरियाज दैट आर कमिंग अप, लाइक मेथनॉल इकोनॉमी, एथनॉल इकोनॉमी। देन एक नई टर्म आ गई ना, ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर भी हम बात करेंगे इस सेशन में। Green hydrogen, all these clean technologies are valued or they are believed to create around 5 million jobs in the near future. So imagine the dependence on this set of energy. Now what are India's target? Let us see. Now this is very important guys for mains exam. You should know all these targets when you are writing the questions on energy. एनर्जी पर एक क्वेश्चन लगभग हर साल आ ही रहा है, यू कैनॉट इग्नोर दिस एरिया। सो व्हेन इट कम्स टू एनर्जी, व्हाट आर द इंडियाज टारगेट? सो इलेक्ट्रिक पावर, इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इंडिया हैज सेट अप सम एम्बिशियस टारगेट, लाइक we want to reduce the carbon intensity of the nation by less than 45% by the end of this decade. 2030 तक कार्बन इंटेंसिटी को हम 45% करेंगे। एंड बाय द वे गाइस, दिस इज वन ऑफ आवर INDCs, इंडेंटेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस। नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, ये हमारा INDC है। देन 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विल कम फ्रॉम द रिन्यूएबल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, हमारा टारगेट है 450 गीगावाट ऑफ एनर्जी टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस एरिया। देन द ग्रीन हाइड्रोजन, India aims to create 5 million tons of green hydrogen by 2030. 5 million gigawatts of renewable energy. This is something that we are aiming for 2030. Then solar parks. We are working on establishing solar parks
What are solar park? Basically a area where there is a large number of solar energy that is created. ठीक है, इंडिया ने फ्लोटिंग सोलर पार्क भी बना लिया है. देर आर 100% सोलर पावर विलेजेस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का एक लौता 100% सोलर पावर विलेज है मोढेरा, गुजरात में. दिस इज 100% सोलर पावर विलेज. और फिर आपकी पालनी पंचायत इज द फर्स्ट पंचायत इन J&K that is 100% सोलर पावर्ड पंचायत. सो इस तरह के इंडिया के जो टारगेट और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, all these things becomes important. So with this 57 solar park, India is planning to build 39.28 gigawatts of energy, with which we are also planning to install wind energy. The target is to create a 30 gigawatt of offshore wind energy by 2030. Now what do you mean by offshore? Basically जो दो तरीके की विंड एनर्जी होती है. एक होती है कोस्टल एरियाज पर. ज़्यादातर कोस्टल एरियाज पर विंड एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना ईजी होता है बिकॉज देर इज मोर विंड्स दैट आर ब्लोइंग थ्रू आउट द डे. बट कई बार हम ये विंड प्लांट्स और विंड मिल्स इंटीरियर में भी लगा देते हैं, इंटीरियर ऑफ द लैंड. सो दिस इंटीरियर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस विंड पार्क आर नोन एज द ऑफशोर विंड एनर्जी. ठीक है, इसको कहते हैं ऑफशोर. ये जो कोस्ट के आसपास है इनको कहते हैं ऑनशोर विंड एनर्जी. देन गाइस, in this union budget there has been some important announcements like green growth. Green growth is one of the important 7 priorities of the Saptarishi framework. Then they have allocated, the government have allocated $2.4 billion for national hydrogen mission. हाइड्रोजन को तो मैं अलग से आपको डिस्कस करेंगे. what is hydrogen mission, what are the advantages, what are the challenges. ठीक है, and we are planning to introduce hydrogen by 2030 with the additional $36 million allocated for hydrogen projects for our country. Then to support 4 gigawatts of battery energy storage system through the availability gap funding. That means the government is working to raise funds for the solar energy. Then emphasis on the pumped storage project with the formulation of detailed framework. So ये सारे कुछ यूनियन बजट के अनाउंसमेंट्स हैं जो कि एनर्जी के एरिया में और रिन्यूएबल एनर्जी के एरिया में गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड. वी विल टॉक ऑन दीज ईच एनर्जी इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हर टाइप के एनर्जी के क्या स्टेटस है, क्या उसका प्रेजेंट कंटेक्स्ट है, कितना हमने अचीव कर लिया, क्या टारगेट है, एंड देन व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड. हम उस एनर्जी को कैसे फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गाइस. सो आज के लिए इस सेशन में इतना ही. नाउ गाइस, इफ यू आर प्लानिंग टू जॉइन श्रीराम IAS at Unacademy, you can use this code Srirams. इससे आपको straight away 25% का ऑफ मिलता है. All your things will be covered here. Your prelims, your mains, your interview, your answer writing, optional, everything is covered here. These are the list of optionals that we will be covering. ये list of optionals हैं जो कि आप Unacademy पर हमारे साथ कवर कर सकते हो. इसके साथ साथ ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी भी ऐड हो गया है. सो ऑल इंपॉर्टेंट ऑप्शनल्स आर अवेलेबल एट श्रीराम IAS. सो यू कैन कम एंड join us at Unacademy using this code Srirams. So मिलते हैं guys next Saturday. 10 a.m. will be the timing of the class. At 10 a.m. next Saturday I will come back and we will start discussing the clean energy in that session. इस पूरे मंथ हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को कवर करने वाले हैं.
So every Saturday 10 a.m. tune in to this channel, so that, and also subscribe to this channel so that you get all important